NetSkills stands for New Emerging Technology Skills. It is a training program which empowers young men and women in backward areas with modern skills so that they can seize new opportunities in the marketplace and improve their livelihoods. NetSkills was initiated in 2010. It was inaugurated by the former Indian Home Minister Mr. P. Chidambaram. At a later function, he was accompanied by Mr. Arno Schaefer, Minister Councillor, Head of Operations, Delegation of the European Union to India, and Dr. B.K. Shukla, Advisor, Department of Science and Technology, Government of India. The program, implemented in select backward areas of India, was supported by the European Union and the Department of Science and Technology, Government of India. We all know that the economic opportunities in the backward areas are limited, and that is why these people migrate to the urban areas, and with programs like NetSkills we are creating opportunities at the local level, and these opportunities are sustainable, and in the long run they will not allow the labor to shift from rural areas to urban areas. The special features about the NetSkill project is the unique diverse geographical spread which covers the southern, eastern and the western part of the India, targeting the backward regions in those particular areas, and also the diverse traits which it is actually focusing on, which is in alignment with the market demands and also providing new avenues for employability. NetSkills was conceptualized and implemented by TREC-STEP, a pioneering science and technology entrepreneurs park in Tiruchirappalli in Tamil Nadu. It was executed in partnership with the Vivekananda Institute of Biotechnology in Neempeet in West Bengal and the Science and Technology Park, Pune. Everywhere, the focus was on new skills for backward areas. There are certain regions, certain districts which is bypassed by development, by mainstream development. So these regions, these districts need to be empowered with new technologies. So if we can provide new emerging technologies to backward districts, to backward regions, people who are marginalized and most vulnerable in the backward districts, and they get better opportunities, they get better capabilities to fight and come back. This is what the new emerging technology skills, the NetSkills program, is all about. This is Karaikudi, an important town in the district of Shivaganga in Tamil Nadu. As a part of NetSkills, TREC-STEP has established a modern nodal center here. The center is being run by the provider's business academy on a public-private partnership basis. The center offers short-term, hands-on courses on the maintenance of computer hardware, electronic appliances, refrigerators and air conditioners, mobile phones, and modern home appliances. These trainees come from severely challenged backgrounds, both economically and socially challenged backgrounds. And many of their earlier attempts were unsuccessful in helping them gain a decent job through skill improvement. So the challenge here was to get them immediately to overcome their skepticism and get into learning mode as quickly as possible. In order to achieve these objectives, NetSkills follows a number of strategies. 1. It employs modern teaching devices. நல்லா வேகமாக படிக்க முடியுது, தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியுது. காரணம் என்னென்னா எஜுகேஷனல் எய்ட்ஸ் வச்சு சொல்லித்தராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் காம்பனன்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப சின்னமாக இருக்குது, வெறுங்கண்ணில் பார்க்குறது கொஞ்சம் சிரமம். அதனால் எல்சிடி ப்ரொஜெக்டர் வச்சு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி காட்டுறதுனால தெளிவாக தெரியுது. டவுட்ஸுங்கிறது நாங்கள் அப்பப்போ கேட்டுறதுனால தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியுது. எஜுகேஷனல் எய்ட்ஸுங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. Secondly, the training limits classroom theory to a bare minimum. Instead, the focus is on practical demonstrations and on learning by doing. Trainees are encouraged to dismantle products and assemble them. மற்ற இன்ஸ்டியூட்டில் ஒரு தியரி மட்டும் நடத்திட்டு தியரி பேஸ்டாக
ஒரு எக்யூப்மெண்ட்டை வந்து கண்ணில் காட்டுறதோட விட்டுறாங்க, அதை வந்து தொடக்கூட விட மாட்டாங்க. பட் இங்கே அப்படி கிடையாது. அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டையோ அந்த எக்யூப்மெண்ட்டையோ நம்ம கையிலே கொடுத்து அதை நம்ம டிஸ்மேண்டில் பண்ண வச்சு அதை வந்து அசம்பிள் பண்ண வச்சு அதில் உள்ள ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நமக்கு தெரிய வைக்கிறாங்க, புரிய வைக்கிறாங்க. இந்த கோர்ஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது எதனாலனா, என்னால் வந்து அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை ஃபுல்லாக சீக்கிரமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது. அதே மாதிரி என்ன எல்லா பொருளும் என்னால் அசம்பிள் பண்ண தெரியறதுனால என்னால் வந்து அதை டீப்பாகவும் ரொம்ப சீக்கிரமாக என்னால் கற்றுக்க முடியுது. Moreover, trainees are encouraged to ask questions and get their doubts clarified. எனக்கு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் பண்ணுறத பற்றி கிளாஸில் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க. அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு. என்னோடய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கிட்ட நான் கேட்டேன் இந்த மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கேன்னு. அவங்க வந்து ஃப்ரீ ஹவர்ஸில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் கிளாஸ் ஓவர் ஆனோன்னு சொன்னாங்க. And then there are important sessions on soft skills. TREC-STEP had designed the soft skill program to address areas like communication skills, behaviors and attitudes, especially because these trainees were going to be in the customer interface area, and where the behaviors and attitudes make all the difference in dealing with customers. The other issue is one of gender. NetSkills trainers are fully aware that women undergoing technical training may need special attention. பெரும்பாலும் நம்ம கிட்ட வரக்கூடிய கேர்ள்ஸ் ட்ரெயினிஸ் எல்லாருமே வளர்ப்புனால டெக்னாலஜி சைடு அப்படின்னு சொன்னாவே ரொம்ப பயத்தோடு தான் வர்றாங்க. அவங்களுக்கு நான் ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்து சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரு லேடி ட்ரெயினராக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஈஸியாகவே சொல்லிக் கொடுக்குறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து செய்கிறதுக்கு ஒரு 1 month ஆகுது. அந்த 1 monthக்கு அப்புறம் அவங்க ஃபியர் எல்லாமே போயிடுது. அதுக்கப்புறம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. Indeed, there are other complex social issues that trainers often have to address. We found mothers had some difficulty in sending their daughters to our institution and also for the job placements. We called them, addressed the issue and got that sorted out. At the same time, we also had the corporates from the industry addressing the parents and telling them how safe it is for their daughters to come and work at their place. And this, I think, was the success for our implementation of the training. The faculty goes and plays a role beyond just being a teacher. They take care of them, they handhold them, they ensure that their personal problems, if any, is being sorted out. They also help them in terms of any gender issue is there or any caste issue is there. What is also important is that the instructors continue playing an important role even after the trainees have finished their courses. Saraswati, a former trainee who has started a small enterprise for servicing computers, elaborates. நான் TREC-STEPல 6 months ஆயிடுச்சு ஹார்ட்வேர் கோர்ஸ் முடிச்சு. இப்போ ஒரு இடத்துல சர்வீஸ் பண்ண போனாலும் எனக்கு ஏதாவது ஒரு டவுட்னா உடனே வந்து நான் கால் பண்ணி ஸ்டாஃப்ட்ட கால் பண்ணி கேட்டேன்னா அவங்க வந்து கிளியராக எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. அதை வச்சு நான் வந்து பிஸ்னஸ் ரீதியாகவும் ஹார்ட்வேர் ரீதியாகவும் எனக்கு எந்த இதுனாலும் டவுட்டை கிளியர் பண்ணுறேன். This holistic learner-centric approach is shared by the other NetSkills partners. This is VIB, or the Vivekananda Institute of Biotechnology in Neempet in West Bengal. VIB has set up its nodal center at Gangasagar, an island in the Ganges Delta in West Bengal. The center is playing the vital role of implementing NetSkills in this backward area. Under this NetSkill project, we try to develop a model so that the livelihood condition is better of the man and woman of the rural area. And the important thing that SNT intervention was there in a particular biotechnological field which is environment friendly, not harmful to the soil and environment. VIB offers 3 courses: aquatic biotechnology, biofertilizer technology and horticultural biotechnology. These are vast, complex subjects, and in order to impart meaningful training in a short span of time, the trainers have had to evolve clear strategies. Scientific findings language অনেক দুর্বোধ্যভাবে ওখানটায় লেখা থাকে, সেইটা সাধারণ মানুষ পড়ে বুঝতে পারে না। সেগুলোকে সহজ করে নিয়ে এসে এদের যে ভাষায় বুঝবে সেই ভাষায় ওদের প্রকাশ করা এবং সেই পদ্ধতিটা ওদের ভাষার মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া। আমি ট্রেনিংয়ের সময় দুটো জিনিস চেষ্টা করি।
তাদেরকে অ্যাওয়ার করার চেষ্টা করি, সচেতন করার চেষ্টা করি। দ্বিতীয় যেটা করি ইনকিউজিটিভনেস, অর্থাৎ তাদের মনে প্রশ্ন করার প্রবণতাটাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য। দুটো যদি করতে পারে তাহলে তারা আপনা থেকেই পথ খুঁজে পাবে এবং তারা অবশ্যই সাকসেসফুল হবে। Ask questions, seek answers, and apply quality science and technology inputs. It's a strategy that works. Take the case of Vishwaranjan Das, now a successful fish farmer. ট্রেনিং থেকে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস পেয়েছি কি জলের পিএইচ লেভেল। জলের পিএইচটা সাধারণত হওয়া দরকার 7.5 থেকে 8.5। তো আমার পুকুরের পিএইচ লেভেল অনেক কম ছিল, সেই জন্য সেই পুকুরে চুন দিয়ে পিএইচ লেভেলটা ঠিকমতো ঠিক হয়ে গেছে এবং মাছও ভালো পাচ্ছি। Many of the trainees are small farmers who come from far-flung areas. That's why this course is fully residential. However, one group of farmers was unwilling to stay away for such a long time because of their farming commitments. VIB saw this challenge not as a hurdle, but as an opportunity. That made us realize and design a staggered training program for them. They would come and have the training for say 7 to 10 days at a time. They go back, implement what they had learned during the training program and come back after an interval of time, and they come back with their own problems what they faced during the implementation of what they had learned. Such a staggered program actually helped improve the quality of training. For instance, these trainees of horticultural biotechnology have just come from their village for their second stint of training, and they have interesting achievements to report. এই আজলাটাকে আমরা চিনতাম না। আগে আমাদের ওখানে পুকুরে হতো, ইঁদুরকানি ভাবতাম, জল নষ্ট হয়ে যাবে, গায়ে চুলকানি বেরোবে বলে আমরা এটাকে তুলে ফেলে দিতাম। এই সাগরদ্বীপে 7 দিনের ট্রেনিং নেওয়ার পরে এইটা জানতে পারলাম অ্যাজোলাটা খুব উপকারিত জিনিস, এ থেকে জৈব সার তৈরি হয়। আমি নিজেই ট্রেনিং দিয়ে গিয়ে গাছের গোড়ায় দিয়েছি, খুব ভালো ফসল পেয়েছি, মানে গাছের চেহারাও ভালো হয়েছে। মানে এইটাকে আমরা এখন জৈব সার হিসাবে ব্যবহার করি। Meanwhile, nestling in the Western Ghats and 1,200 kilometers away as the crow flies is the village of Khandgidara. Sheetal, who had dropped out of school 3 years ago, is on her way to her own training program. She is headed for Sangamner, a small town in the backward district of Ahmednagar in Maharashtra. This is where the third Net Skills Nodal Center is. मी सकाळी रोज बसने येते. माझं गाव इथून 35 किलोमीटर आहे. मी रोज 1 तास जायला आणि 1 तास जायला घरी 2 तास लागतात. आणि मग हे ट्रेनिंग घेऊन मी काहीतरी म्हणजे गावामध्ये काहीतरी करू शकते आणि 2 पैसे कमवू शकते. The Net Skills training program here is being implemented by the Science and Technology Park located at the University of Pune. Within Ahmednagar district, western region of Ahmednagar district was still more backward, and which is within the heart of Western Ghats, or majority of the area is within or in the foothills of Western Ghats, where there are pristine forests, and conservation of forests is a very important issue. So we thought, what are the basic issues which people are facing and what kind of skills can be given so that pressure on the environment and forest is reduced. The Net Skills program here offers 2 courses, one on solar and wind energy appliances and the other on biomass-based cooking fuel and energy-efficient stoves. The challenge for the program is that many of these trainees are school dropouts. मुलांना शिकवताना हा प्रॉब्लेम आहे की त्यांना सायन्सची भीती वाटते, परंतु हे जे काय आपण इथे सायन्स शिकवलं जातं हे थेअरी पूर्ण आहे, परंतु त्याचा संलग्न भाग म्हणजे मराठी आणि आसपासच्या वातावरणाशी आम्ही संलग्न करून देतो. त्यामुळे रोज आपण ज्या गोष्टी बघतो त्यातून ती मुलं जास्त शिकतात आणि या गोष्टी आम्ही त्यांना शिकवलेल्या आहेत त्या घरी जाऊन ते इम्प्लिमेंट करतात. त्यामुळे या गोष्टी त्यांना परत शिकवायची, जे शाळेमध्ये होतात गोष्टी कळत नाही मुलांना, परत गोष्टी होतात, ते करायची गरज पडत नाही. It's an approach that has worked. Take the case of these former trainees who have come together and as a part of a microcredit group make solar lanterns. जेव्हा आम्ही सुरुवातीला
प्रथमच सोलर लॅम्प बनवला त्यावेळेस खूपच आनंद झाला का क्षणभर असं वाटलं की आम्ही एक इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरच बनलो म्हणून. So how did this unusual enterprise take off? आम्हाला नाशिक वन विभागाची 700 लॅम्पची ऑर्डर मिळाली आणि ही ऑर्डर पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व महिलांनी झटून काम केलं. त्या ऑर्डर पूर्ण करून जो प्रॉफिट झाला आम्हाला 2,50,000 तो आम्ही प्रत्येक महिलेला 20-20 हजार रुपये दिले आणि बाकीचे जे 30,000 रुपये होते ते आम्ही परत नवीन ऑर्डर मिळवण्यासाठी किंवा नवीन मार्केटिंग करण्यासाठी गुंतवणूक केली. So successful has been this experiment that the Forest Department of the Government of Maharashtra now wants to expand the program. सध्या आपण हे 700 ते 1,000 सोलर बॅटरी जे आपण लोकांना दिलेले आहेत याचे अतिशय चांगले रिझल्ट आहेत आणि भविष्यात माझी संकल्पना प्रत्येक घरात हा लाईट देण्याचा आमचा विचार चालू आहे. याच्यासाठी मग स्थानिक जो आमचे आदिवासी महिला बचत गट आहेत त्यांनाच आपण आता ट्रेनिंग देऊन घेणार आहेत आणि त्यांनाच एक रोजगार तयार करून देणार आहेत जेणेकरून त्या गरीब लोकांना एक रोजगार तयार होईल आणि प्रत्येक घरात बॅटरी होईल ही आमची आता एक पुढची कल्पना आहे. Indeed, there has been a growing support for such a training program, even amongst policymakers. Truly speaking, I am very much impressed with the program. The way the they train the youth for a very short period of time using science and technology. This is a very important issue as far as our area is concerned. And hence I wish that we will continue this program in future also. Of course, we expect that government or other some corporate people, they should help this program so that we can take it to more young people and women. By the end of the program period, the Net Skills Training Program had trained over 3,000 young men and women in 3 backward areas of the country in 9 different trades. Many of these former trainees are now using their newly acquired skills to earn a decent livelihood for themselves. For instance, Saravanan and Karthik have got jobs with VV Systems and Services, a computer repair center in Karaikode, and Vignesh, another former trainee, is now a technician in this Samsung Authorized Service Center. சாம்சங் டெக்னாலஜிஸ் எவ்ரிடே நமக்கு வளர்ந்துக்கிட்டே வந்துட்டுருக்கு. சேஞ்சஸ் நிறையா வந்துட்டுருக்கு. அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு எங்களுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நல்ல ஹை எஃபிஷியண்ட்டாக தேவைப்படுறாங்க. அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸு TREC-STEPலேருந்து வர்றவங்க எங்களுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ணி தர்றாங்க, நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக பண்ணி தர்றாங்க. Revati, another former trainee, now works with Galaxy Research Technologies and has become an expert in the production of nano-coated hollow fibers. Bhuminathan has chosen to start a shop selling and repairing mobile phones, and Radhika has set up her own fully equipped mobile repair center at her residence. தினமும் 3 மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணி நான் அந்த கோர்ஸை போய் கற்றுக்கிட்டதுனால 3 மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆகுங்கிறதே எனக்கு தெரியல. அதிலேருந்து நிறைய கற்றுக்கிட்டதுனால எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. இதோட ஸ்கில் நாலேஜும் வச்சு ராதிகா அப்படிங்கிறவங்கள இன்றைக்கி இந்த ஊரில் நாங்கள் மதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு பெருமைக்குரிய விஷயமா இருக்குது. இதனால் நான் ரொம்ப பெருமைப்படுறேன். Meanwhile, in Neempeet in West Bengal, Bappa has got a job with Sundarban vermicompost, and Shubhankar is exploring zero-tillage potato farming, a technique that bypasses the expensive ploughing process and leads to a better yield. Dipankar runs a flourishing business of breeding catfish, and in a humble home, Rashida uses a hygienic and a scientific technique for processing shrimps for sale. In Sangamner, Sonali has started retailing and servicing solar lanterns and energy-efficient stoves, and Yogesh now manufactures bio-pellets, which are becoming popular as cooking fuel. Mahesh and his colleague have been a part of a corporate social responsibility initiative that has brought in solar power to the isolated hamlet of Anandwadi and transformed the lives of the villagers here. And Sunil and his partner are a part of a town project to explore the possibilities of replacing tungsten street lamps with energy-saving LED ones. Diverse skills in diverse backward areas.
Net Skills, as was visualized by TREC-STEP, has clearly delivered results. And by doing so, it has created a successful training model which can now be replicated. We have worked with many ministries, many national and international organizations, even bigger financial institutions to see to that this project lives forever and benefits the wider community. These efforts have been productive. For instance, IDBI Bank is now supporting a TREC-STEP program called TREC-STEP or Shivaganga Regional Empowerment through Skill Training Alliance. TREC-STEP, which is being conducted in Karaikode, will train around 350 young men and women. What is significant is that the program is placing a special emphasis on including the more vulnerable, differently abled men and women. In the near future, these trainees will use their newly acquired skills to get jobs for themselves or become entrepreneurs. They will create jobs and diffuse their quality skills. And by doing so, they will become vital agents of change in areas which are currently starved of new technology skills. Areas which are backward, but areas which can now start looking forward.